Dear students, today I will teach you rules for change of pronoun or person. In the former class, the former lecture, I had taught you rules for change of tense and its exceptions. I think you have got the things. आज हम आपको प्रोनाउन परिवर्तन के नियम बताएंगे। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं तो आप रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए फर्स्ट आपको ये जानना चाहिए कि प्रोनाउन क्या है। आप जानते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। सामान्य परिभाषा हुई। यहां पर आप प्रोनाउन के पर्सन और केस, प्रोनाउन के 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और इसके अलावा इसका 3 फॉर्म होता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म। ये किस रूप में आया हुआ है, आपको चेंज प्रोनाउन को नियमों के अनुसार परिवर्तित करके उसका वही फॉर्म लिखना होता है। मीन्स you should know that pronoun have 3 persons and 3 cases. First person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. In nominative form, nominative or subjective form, objective form and possessive form. In first person, under first person pronoun, nominative form I and we. Objective form for I is me and for we is us. Possessive form for I is my and for we is our. Is that clear to you? Under second person of pronoun, in subjective or nominative form you will write you at the place of subject. In objective form also you will write you but at the place of object. When you is used at the place of subject, it should be considered as nominative or subjective. And if this you, the word you, is placed at the place of an object, then it should be considered in objective form. And for possessive form, your possessive form of you is your or yours. In third person pronoun, you will find he, she, it and they. He for masculine, she for feminine, it for abstract things and they for plural. Objective form for he is him, she, her, it, the same it and they, them. And possessive form for he is his, she, her, it, its and they, their or theirs. So, when you will get any of these pronouns in reported speech, you will change it according to the rules. What are the rules? नियम क्या है? नियम यह है कि यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या पॉजेसिव हो, यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। व्हाट इज सब्जेक्ट? द स्पीकर। स्पीकर इज द सब्जेक्ट। यदि सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो आप उसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। आप व्हाट इज ऑब्जेक्ट? टू whom द स्पीकर स्पीक्स। और यदि थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आता है किसी भी फॉर्म में, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में
कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, and third person there will be no change. In this way you get a formula 1 2 3 by sun. Shortcut you can remember it. Now we will see the examples. Just see once again, if a first person of pronoun occurs or comes in reported speech, it will be changed according to subject. If second person of pronoun comes in reported speech, it will be changed according to object. Second person according to object, and there will be no change in third person of the pronoun. There will be no change in third person of the pronoun. For example, Ramesh said to me, I have done my work. Generally, you know, because object is here, so said will be changed in told. Ramesh told me. You will remove the inverted comma and put the conjunction that. That I is a first person subjective. First person pronoun is subjective form. So first person is changed according to subject. What is subject? Ramesh. Ramesh is a name. It is third person, and in third person for masculine you will use he as a subjective form. So I will be replaced with he. बात समझ में आई आपके? I फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट है रमेश, ये एक नाम है, थर्ड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन में हम इसको ही शीट दे में से, क्योंकि ये मैस्कुलिन है तो ही से लिखेंगे, और सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखा जाएगा, आई की जगह लिखेंगे ही। नाउ वी विल चेंज द टेंस। अब आप टेंस परिवर्तन करेंगे। आई हैव डन माय वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज्ड इन पास्ट परफेक्ट। आई हैड डन, हैव का हैड, डन माय फर्स्ट पर्सन पजेसिव, फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है रमेश, थर्ड पर्सन लिखेंगे ही से, क्योंकि ये पजेसिव फॉर्म है तो ही का भी पजेसिव फॉर्म लिखेंगे हिज, हो जाएगा ही हैड डन हिज वर्क। ऐसे रमेश told me that he had done his work. Is that clear to you? Secondly, the teacher said to me, you are working hard. Second person pronoun, you. Teacher said to me, you are working hard. The teacher told me that you, second person subject. Second person will be changed according to object, and object is me. Because you is here in subjective form, that is why we will use subjective form of me. What is subjective form of me? I. So you will be replaced with I. You are working hard, present continuous tense will be changed in past continuous tense. I was working hard. The teacher told me that I was working hard. Is that clear to you? Now third person will see. Now you will see that if the second person of pronoun comes in reported speech and no object is given, if the second person of pronoun you comes in reported speech and no object is given, that time you can use an object according to the proper demand of the sentence.
आप एक सही या उचित प्रोनाउन अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन वो उचित होना चाहिए। माई ब्रदर सेड यू आर डूइंग योर ड्यूटी मीन्स माई ब्रदर सेड टू मी, so I write my brother told me that I was doing my duty. My brother told me that you, second person according to object, because I have supposed that my brother is saying to me, so you is subject, subjective form of me is I. Change of tense, you are doing, present continuous tense will be changed in past continuous. I was doing your will be changed in my duty. Why my? Because your is the possessive of you, second person will be changed according to object, and I have supposed that object should be me, because your is in possessive form, so possessive form of me is my. At last, when a third person of pronoun comes, there will be no change in third person of pronoun. Ravi said to me, he is playing cricket. He is playing cricket. You write Ravi told me that. He is the third person pronoun, there will be no change. He is was. Present continuous into past continuous, so he will be changed in was. He was playing cricket. In this way, very clearly you should know that first person of pronoun is changed according to subject, second person of pronoun is changed according to object, and third person of pronoun you will get no change, you will do no changes. प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही प्रोनाउन या पर्सन के चेंज का नियम है। आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आई होगी। आप अनसॉल्व एग्जांपल्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज अनसॉल्व एक्सरसाइज आपको प्रेषित करूंगा और आप उसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप निःसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।